Good morning, fam. This is Mohammed Saifuddin signing in, and today we are going to discuss about a very important topic of class 10, um, Cbse AI of code 417, which is very important for the examination point of view since the board examinations are arriving and in AI, it is one of the most important topics that we have to read. It is called model evaluation. So let us start with the confusion matrix. So confusion matrix is basically a method to calculate the or evaluate a AI model. Like if we want to deploy an AI model in the coming future, like किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क में अगर हम लोग कोई भी AI मॉडल को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो उससे पहले वी हैव टू गो थ्रू द लाइक AI प्रोजेक्ट साइकिल. वी हैव टू undergo the whole project cycle, and at the end we have to do the evaluation of that AI model. उस AI मॉडल का हम लोगों को इवेल्युएशन करना पड़ेगा. व्हाट डज इवेल्युएशन मीन्स? इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? It can be understood as an examination. What do we actually do? We study the whole year. हम लोग पूरे साल पढ़ाई करते हैं और at the end of the year the annual examinations are taken. लास्ट में हमारा एक एनुअल एग्जामिनेशन होता है, जिस एनुअल एग्जामिनेशन के बाद वी गेट टू नो दैट कि कोई भी लाइक हाउ मच वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा, हमने क्या जाना, हमने क्या पढ़ा है, राइट? तो इन द सेम वे व्हेन यू हैव डिजाइंड एन एआई एंड यू वांट टू डिप्लॉय इट, ओके, तो हाउ बेटर द एआई इज वर्किंग, ये बात पता चलती है आफ्टर इवेल्युएशन. इवेल्युएशन एक प्रोसेस है जिसे हम लोग ये पता करते हैं कि द एआई इज प्रिडिक्टिंग करेक्टली और इट इज नॉट, राइट? सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक क्लासिफिकेशनल मॉडल को इवेलुएट करने का बस एक मेथड है. इसमें एक टेबुलर फॉर्मेट होता है वेयर वी हैव द ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज, जिससे हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो है वो एक्चुअल वैल्यूज के साथ टैली कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, राइट? हाउ वेल द एआई इज प्रिडिक्टिंग, हाउ वेल द एआई इज परफॉर्मिंग. दिस इज बेसिकली द कंफ्यूजन मैट्रिक्स. अब बात यह है कि सिर्फ कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना लेने से तो एआई इवेल्युएट नहीं हो जाता है. हम लोगों को कुछ ना कुछ तो मैथमेटिकल मींस का यूज करना ही पड़ेगा फॉर इवेल्युएटिंग, राइट? देयर मस्ट बी सम वे टू कैलकुलेट हाउ एन एआई इज परफॉर्मिंग, वेदर इट इज अप टू द मार्क या फिर वो मार्क पे नहीं है. ये चीज पता करने के लिए हम लोगों को कुछ मेथड्स तो करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज what we derive out of the confusion matrix. confusion matrix से हम क्या derive करते हैं, क्या पता चलता है हम लोगों को, right? So there are 4 elements, 4 elements हैं. The first one is known as the accuracy, second one is precision, the third one is recall, and the fourth one is F1 score. Okay, before we start, I would like to tell you a very important thing that you should note. बहुत ही important एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव होता है, द टीपी एंड टीएन बोथ आर करेक्ट प्रिडिक्शंस ऑफ द एआई. दोनों एआई के करेक्ट प्रिडिक्शंस होते हैं, बोथ आर करेक्ट, वाइल बाकी दो जो हैं बोथ आर इनकरेक्ट, और वी कैन से द एरर थ्रू द एआई. एआई के थ्रू कोई एरर होता है तो फिर वो दोनों लाइक थिंग्स आर देयर, एंड इफ इट इज करेक्ट प्रिडिक्शन इट इज ओनली ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव. ओके, नाउ लेट अस गो फर्दर. द फर्स्ट वन इज नोन एज एक्यूरेसी. व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो हमारे पास में टोटल वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल है उसमें से करेक्ट ऑब्जर्वेशंस का क्या रेशियो है, करेक्ट प्रिडिक्शंस का क्या रेशियो है. सो एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि करेक्ट प्रिडिक्शंस कौन कौन से होते हैं? ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव, राइट? सो ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एक्यूरेसी, है ना? इट इज सो इजी. एक्यूरेसी मीन्स हाउ वेल और हाउ करेक्ट एन एआई हैज प्रिडिक्टेड द लाइक हाउ वेल द प्रिडिक्शन वेंट ऑफ, कितना अच्छा प्रिडिक्शन हुआ है, कितना करेक्ट प्रिडिक्शन हुआ है, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी.
So it is very simple to calculate true positive plus true negative by total number of observations. And if it is said that you have to find it on percentage, so the formula is very simple. TP plus TN by total number of observation into 100. That's it. The second one is called precision. Precision. Now again, I will ask you a simple question. What are true elements in the confusion matrix? Confusion matrix में true elements कौन कौन से हैं? True positive and true negative. If I ask you what are the positive elements in the confusion matrix, it will be true positive and false positive, right? यही दो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव. तो जितने भी एक्चुअली पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उसमें से ट्रू पॉजिटिव का क्वांटिटी कितना है, ट्रू पॉजिटिव की मात्रा कितनी है टोटल पॉजिटिव एलिमेंट्स या टोटल पॉजिटिव प्रिडिक्शंस में, इसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन. ओके, एंड प्रिसीजन इज समथिंग विच अफेक्ट्स द फॉल्स पॉजिटिव पार्ट. ठीक है, प्रिसीजन एक ऐसी चीज है जो कि फॉल्स पॉजिटिव पार्ट को इफेक्ट करती है. यानी जैसे जैसे हम लोग प्रिसीजन को इंक्रीज करेंगे वी विल सी दैट की फॉल्स पॉजिटिव का वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज करता जा रहा है. मोर प्रिसीजन मीन्स लेस फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज, राइट. द थर्ड वन दैट इज रिकॉल. रिकॉल का मतलब क्या होता है? लाइक इफ यू हैव टू फाइंड आउट कि ट्रू पॉजिटिव कितनी है, लाइक व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव इन ऑल द एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज. एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज. So actual positive values, there are two actual positive values, that is true positive and false negative, right? दो actual positive values होते हैं, true positive और false negative, right? So what is the ratio of a true positive in all the actual positive values? That is true positive by true positive plus false negative. This is called recall. इसको हम लोग recall कहते हैं, right? Recall basically depends upon, it doesn't depends upon, it is like it affects the true positive values. If you increase the recall value, the true positive values will like it will eventually increase. या फिर आप true positive values को increase करेंगे तो automatically you will find out कि recall जो है वो increase करता, ये sorry recall जो है वो increase करता जा रहा है, right? तो true positive values जो है उसको affect करता है recall, right? And after that we have the fourth one. The fourth one is known as the F1 score, right? So since देखो अभी हम लोग दो चीजों को तो continuously जो है वो इग्नोर करते आ रहे हैं, the false positive and the false negative, right? We are continuously ignoring it. So there must be like, वो तो इस तरह से तो होगा नहीं ना कि उसमें उसका कुछ ना कुछ तो यूजेस हो गई. Okay, so there is a bridge between like we have to create a balance between these two things. सो precision और रिकॉल के बीच में जो लाइक देयर इज अ मेट्रिक बैलेंस बिटवीन दीज टू, और इसी को हम लोग कहते हैं F1 स्कोर. सो व्हाट इज F1 स्कोर? F1 स्कोर इज द balance between the precision and recall, and as we know that F1 score is equal to 2 times precision into recall by precision plus recall. So इसके फार्मूला से भी बिल्कुल समझ में आ रहा है हम लोगों को कि precision और recall के बीच में जो बैलेंस होता है उसका जो मेट्रिक बैलेंस होता है दैट इज नोन एज F1 score. Now these four things are very important, and right here I have shown you how to calculate it, right? The formulas have been displayed to you. So I wish you might have no problem in understanding what confusion matrix is, what evaluation is, and what is accuracy, what is precision, what is recall, and what is F1 score. You know what is the difference between precision and recall? That's a question up for you, right? I wish you good luck for your examinations. Thank you.